Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I will be discussing liability of the surety in a contract of guarantee and discharge of surety's liability. Let's start with liability of surety and its nature and extent. Section 128 of the Indian Contract Act deals with the liability of surety. Section 128 provides that the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor unless it is provided otherwise by the contract. So, as per section 128 of the Indian Contract Act, the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor. That means the liability of the surety is same as that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract. So, surety की जो liability होती है वो प्रिंसिपल डेटर की जितनी ही होती है, जितनी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी होती है उतनी ही श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है. On a default having been made by the principal debtor, the creditor can recover from the surety all what he could have recovered from the principal debtor. For instance, the principal debtor makes a default in the payment of rupees 10,000. Now the creditor can recover from the surety the sum of rupees 10,000 plus the interest that is becoming due thereon as well as the amount spent by the creditor in recovering the amount. So, liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor and so surety की जो liability होती है वो principal debtor की जितनी ही होती है. तो liability of surety को समझते हैं एक उदाहरण की मदद से. A ने B से 10,000 रुपये उधार लिए हैं और सी बनते हैं गारंटर. सी कहते हैं कि अगर ए 10,000 रुपये बी को रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो सी उसकी गारंटी लेते हैं और सी रिटर्न करेंगे. तो होता ये है कि ए बी को 10,000 रुपये नहीं वापस कर पाते. अब सी की लाइबिलिटी आती है क्योंकि सी बने हैं गारंटर. तो इस उदाहरण में सी की लाइबिलिटी, सी जो श्योरिटी है उनकी लाइबिलिटी उतनी ही है जितनी ए की थी जिन्होंने उधार लिया था. तो ए ने 10,000 रुपये उधारी लिए थे तो सी की भी लाइबिलिटी 10,000 रुपये की ही होगी. तो सी को 10,000 रुपये और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनते हैं और उस 10,000 रुपये लेने के लिए बी को जितने भी पैसे खर्च करने पड़े ये सारा अमाउंट बी जिन्होंने पैसे ए को दिए थे ले सकते हैं सी से जो कि श्योरिटी या गारंटर बने थे. श्योरिटी या गारंटर की लाइबिलिटी उतनी ही होती है जितनी प्रिंसिपल डेटर की होती है. इसीलिए कहा जाता है कि लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. Now, it is to be noted that if the principal debtor's liability is reduced, that is, if the principal debtor has paid a part of the sum due, then the liability of the surety is also reduced accordingly. तो अगर principal debtor की liability भी अगर reduce हुई है, अगर कम हुई है, मान लीजिए जो ए ने बी से पैसे उधार लिए थे 10,000 रुपये, उसमें से अगर ए ने बी को 5,000 अगर चुका दिए हैं तो ए की लाइबिलिटी कितनी बची है? सिर्फ 5,000 रुपये. तो इस केस में गारंटर की लाइबिलिटी भी 5,000 तक की होगी क्योंकि प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी भी कम हो गई है, सिक्योरिटी या गारंटर की लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी. केस ऑफ नारायण सिंह वर्सेस छतर सिंह, it has been held by the court that if the principal debtor's liability is scaled down in an amended decree or otherwise extinguished in whole or in part by a statute, the liability of the surety would also pro tanto be reduced or extinguished. Hence, the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor. Now, let us discuss discharge of surety from his liability. अब बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी की जब कब श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होता है. When the liability of surety which he had undertaken under a contract of guarantee is extinguished or comes to an end, he is said to be discharged from his liability. Now, there are certain modes by which a surety is discharged from his liability and let us understand this one by one. So, the first mode by which a surety is discharged from his liability is by revocation by the surety. This is provided under section 130 of the Indian Contract Act. Section 130 of the Indian Contract Act provides that a continuing guarantee may at any time be revoked by the surety or
as to future transaction by notice to the creditor. So section 130 provides that a continuing guarantee may be revoked by the surety himself as to the future transaction, and for this he has to give notice to the creditor. So section 130 talks about continuing guarantee. Now what is continuing guarantee? A continuing guarantee is a guarantee which extends to a series of transactions, that is, it extends to more than one transaction. There are more than one transactions, and when this guarantee extends to more than one transaction, it is called continuing guarantee. So in case of a continuing guarantee, the surety himself can revoke the guarantee in respect of the future transaction by a notice to the creditor. तो पहला मोड जिससे श्योरिटी अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होते हैं वो है बाय रिवोकेशन बाय द श्योरिटी खुद अपनी लाइबिलिटी को रिवोक करते हैं, और इसके लिए उनको क्रेडिटर को एक नोटिस देनी जरूरी होती है. ये जो डिस्चार्ज है बाय रिवोकेशन ये अप्लाई होती है कंटिन्यूइंग गारंटी में. कंटिन्यूइंग गारंटी वो होती है जिसमें गारंटी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पे नहीं दी जाती बल्कि एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस पे दी जाती है. सो जब सियोरिटी को कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करना होता है तो वो एक क्रेडिटर को एक नोटिस दे के अपनी लाइबिलिटी को वो रिवोक कर सकते हैं. कमिंग टू द सेकेंड मोड, द सेकेंड मोड बाय विच सियोरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी इज बाय सियोरिटीज डेथ. It is provided under section 131 of the Indian Contract Act. So section 131 provides that the death of a surety operates in the absence of any contract to the contrary as a revocation of a continuing guarantee so far as regards the future transactions. So another mode by which a surety is discharged from his liability is his death. तो दूसरा मोड जिससे श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होते हैं वो है श्योरिटी की डेथ से. जब श्योरिटी की डेथ होती है तो वो अपनी गारंटी की लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होते हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड मोड, द थर्ड मोड बाय विच अ श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी इज बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ contract. This is provided under section 133 of the Indian Contract Act. So when the surety has undertaken liability on certain terms, it is expected that they will remain unchanged during the whole period of guarantee. Now if there is any variance in the terms of that contract between the principal debtor and the creditor without the consent of the surety, then the surety gets discharged as regards the transactions subsequent to such a change. So we have to note this, without the consent of the surety, if the terms of the contract between the principal debtor and the creditor undergoes any change, then the surety or the guarantor gets discharged from his liability. This is provided under section 133 of the Indian Contract Act. So तीसरा मोड जिससे श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होते हैं वो होता है कि वो है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से पैसे उधारे लिए हैं, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी चेंजेस लाया जाता है बिना श्योरिटी के कंसेंट से, तब श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं. नाउ कमिंग टू द fourth mode of discharge of surety's liability, and that is by release or discharge of the principal debtor. So this is provided under section 134 of the Indian Contract Act. So when the principal debtor is released of his liability, then the consequences of this is that the surety is also automatically released of his guarantee of his liability. चौथा मोड है जिससे कि श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं वो है डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. अगर प्रिंसिपल डेटर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो श्योरिटी या गारंटर भी अपनी लाइबिलिटी से ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाते हैं. Now coming to the fifth mode. So when the creditor compounds with or gives time to or agrees not to sue the principal debtor, in this case also the surety is discharged of his liability. This is provided under section 135 of the Indian Contract Act. Now, as per section 135 of the Indian Contract Act, a contract between the creditor and the principal debtor discharges the surety in the following three ways. The first one is when the creditor makes composition with the principal debtor. The second one is when the creditor promises to give time to the principal debtor to repay the debt. And the third one is when the creditor promises not to sue the principal debtor in case of his default. It is to be noted that the word composition here means agreeing to pay a lesser amount within a period of time. Hence,
In the above three circumstances, the surety is discharged if the creditor and the principal debtor makes such contract without the consent of the surety. सो पांचवा मोड जिसके तहत श्योरिटी या गारंटर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं वो है कि जब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कंपोजिशन हो जाती है, जिसके तहत क्रेडिटर जो है वो प्रिंसिपल डेटर को कहता है कि जितनी उधारी में पैसे लिए गए थे उससे कम पैसे कुछ समय के अंदर पे कर सकते हैं, या उनको टाइम देते हैं वो उधारी चुकाने के लिए, या उनको कहते हैं कि अगर उनकी डिफ़ॉल्ट होती है, अगर वो उधारी नहीं चुका पाते हैं तो उनको सू नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कोई केस दायर नहीं करेंगे। तो इन 3 सर्कमस्टेंसेस में जो श्योरिटी होते हैं वो अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज होते हैं। In a nutshell, I am repeating again all the 6 modes of discharge of surety's liability. The first one is revocation by the surety. The second one is by surety's death. The third one is by variance in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor without the assent of the surety. The fourth one is by release or discharge of the principal debtor. The fifth one is when the creditor compounds with or gives time to or agrees not to sue the principal debtor in case of his default. Thank you for listening, and if you like the content of my videos, please subscribe to my channel and do like and share the videos. Thank you.